Dear friends, I am Dr. Rajiv Ranjan. I am pediatrician at Noida. Today we will talk about febrile seizures. What is febrile seizures? It is fits in the baby when there is high grade of fever. It is very acute, very sudden. And what are the causes? It is the high grade febrile position is the main cause of this. And what happens in the baby? There is involuntary movements, uncontrolled involuntary movements, then stiffness of the body, sometimes unconsciousness, sometimes coughing, and uprolling of eyeballs are there. So these are the symptoms when you will face febrile convulsion. Now what to do? आप बच्चे को पानी से स्पॉन्ज करें, बदन को पोछे पानी से और पैरासीटामोल की ड्रॉप दें। तुरंत ही अपने निकटतम पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। ये बहुत ही कॉमन है, इसके कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये 6 महीने से 5 साल के बच्चों में काफ़ी कॉमन है, इसका ध्यान रखें। थैंक यू।